Good morning students and welcome back to my class. In continuation of our last class, today we will cover the remaining topic. First we will cover about Mendel experiment. Gregor Johann Mendel is known as father of genetics because he was the first person who has conducted a successful experiment to study inheritance. So he is known as father of genetics. Mendel has chosen pea plant, also known as Pisum sativum, for his experiment. There are several reasons why he has chosen pea plant. Let us discuss about them. The first reason why Mendel has chosen pea plant was short lifespan, so that he can study several generations in a short span of time. Second reason for selecting pea plant was it produces large number of seeds in one generation. Pea plant also shows wide variation, which can be easily seen. 7 contrasting characters of a pea plant which Mendel has chosen for his experiment was seed color, seed shape, pot shape, pot color, color of flower, position of flower and stem height. These were the 7 contrasting characters of a pea plant studied by Mendel for his experiment. Mendel has chosen 2 parent pea plants for his experiment. The plants were having contrasting height. That means one pea plant was having a tall height, whereas the second pea plant was having a dwarf height. After doing cross-pollination, what Mendel has observed? Mendel has observed that the progeny or offspring produced by them were all same, or they all were having a common height. That means all the plants produced by them were tall in height. Mendel ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 पेरेंट पी प्लांट को चूज किया जिनकी कॉन्ट्रास्टिंग हाइट थी. एक पेरेंट प्लांट टॉल था और दूसरा जो पी प्लांट था वो हाइट में ड्वार्फ था. इन दोनों के बीच में क्या कराया गया? क्रॉस पॉलिनेशन. We have studied about cross pollination. What is cross pollination, children? The transfer of pollens from one flower to the other flower of another plant is called cross pollination. अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी. ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस टर्म बेटा. प्रोजेनी रिफर्स टू ऑफस्प्रिंग. So the progeny or offspring produced by them represent the first generation, and the first generation is known as filial generation and is represented by F1. Okay, तो आप भूलेंगे नहीं बेटा कि F1 किसे डिनोट करता है? फीलियल जनरेशन 1. फीलियल जनरेशन 1 के सारे प्रोजेनीज कैसे थे बेटा? दे ऑल वेर टॉल इन हाइट. सभी की हाइट टॉल थी. So this was the first observation that Mendel has made in the progenies of F1 generation. Now Mendel did self-pollination in the progenies of F1 generation. अब Mendel ने F1 generation की जो भी progenies थी उनमें self-pollination करवाया. What is self-pollination? Transfer of pollens from anther of a flower to the stigma of the same flower is known as self-pollination. Now what Mendel has observed after doing self-pollination in F1 generation? He observed that the progenies produced by them were having different height. That means 3 of the plant were having tall height, whereas 1 plant was having a dwarf height. And all these individuals produced by F1 progeny represent filial generation 2, denoted as F2.
मेंडल ने जब F1 जनरेशन की प्रोजेनीज में सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उनसे जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उनमें मिक्स हाइट थी, मतलब 3 प्लांट्स की हाइट टॉल थी और 1 प्लांट की हाइट ड्वार्फ थी. This was the observation made by Mendel in the individuals of F2 generation. ये F2 जनरेशन में जो प्रोजेनीज थी उनके बारे में ऑब्जर्वेशन था कि 3 टॉल प्लांट्स थे और एक ड्वार्फ प्लांट था. ठीक है बेटा. The physical properties that can be seen and easily studied are known as phenotype. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इजिली देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उन्हें हम फिनोटाइप बोलते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पे कौन सा फिनोटाइप कैरेक्टर स्टडी किया? हाइट. We know that children, any trait or character is produced due to genes, isn't it? And the gene expression of that particular trait is known as genotype. किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है और इन जीन्स के मेकअप को या पैटर्न को जिससे ये ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं. क्लियर? Now let us study about the genotype of Mendel's parent pea plant. The first plant was having tall height. So the phenotype character is tall height, whereas the genotype or the genes expression of tall plant is written as capital T and capital T. Why genes are present in a pair? In the beginning of the chapter, I have told you that offspring carries half of the genetic material from its mother and half of the genetic material from its father. तो किसी भी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी के पास जीन्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटा. दिस इज द रीजन व्हाई टॉल ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी कैपिटल टी. तो ये जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है. कौन से ट्रेट के लिए? टॉल हाइट के लिए. ड्वार्फ हाइट को हम कैसे लिखेंगे बेटा जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन में? स्मॉल टी. अगेन ड्वार्फ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स. रीजन आई हैव टोल्ड यू व्हाई जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई tall height pea plant genotypic expression is written as capital T and capital T, whereas dwarf plant genotype expression is written as small t. ऐसा क्यों होता है कि tall height वाले pea plant के लिए capital T यूज हो रहा है और dwarf plant के लिए small t. Why children? Because in F1 generation, all the progenies produced were showing tall height. That means F1 generation में सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था और वो कौन सा था? टॉल पेरेंट का. All the progenies produced in F1 generation was tall. So we can say that tall trait is dominant over here. दोनों पेरेंट्स में अगर हम देखें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हुआ जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया? दैट वाज टॉल हाइट. तो टॉल हाइट क्या हो गया बेटा? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली डोमिनेंट जीन्स को हम कैपिटल में लिखते हैं. सो व्हेनेवर यू सी एनी कैपिटल जीनोटाइप एक्सप्रेशन दैट मीन्स कि वो जीन्स डोमिनेंट है बेटा. अब डोमिनेंट हम कैसे सोचे कि कौन सी डोमिनेंट जीन्स होती है और कौन सी रिसेसिव जीन्स? सिंपल. सी द F1 जनरेशन प्रोजेनीज. जो भी F1 जनरेशन में कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट होता है. तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है? टॉल हाइट. दैट मीन्स टॉल हाइट डोमिनेंट हो गया और जो स्मॉल हाइट था या ड्वार्फ हाइट था वो कौन सा कैरेक्टर हो गया? रिसेसिव. And recessive genes are always written in small letters. This is the reason why genotype of tall plant is written as capital T, whereas the genes of dwarf plant is written as small t. And how you will know that which genes is dominant and which genes is recessive?
by watching the progenies of F1 generation. आप F1 जनरेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी जीन्स या कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेड रिसेसिव है। फिर जो ट्रेड आपको शो हो रहा है F1 में, आप उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ है, जो रिसेसिव ट्रेड है, उसे आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। So this was the rule of writing the genotypic expression of dominant trait and recessive trait. One more point to remember, children, you can choose any alphabet to write genotype expression. Over here I have chosen alphabet T. Why, children? Just to avoid confusion and to make the things more easy. The dominant trait over here is tall height and the first letter of tall height is T. So I have chosen word T over here. It can correlate with the trait or the character that you are studying. So dominant trait is written as capital T and recessive trait is written as small t. बेटा मैंने यहाँ पे कैपिटल T या अल्फाबेट T इसलिए चूज किया है क्योंकि ये कंफ्यूजन और चीजों को कम कॉम्प्लिकेटेड करता है। क्यों बेटा? आप अभी कौन सा ट्रेट स्टडी कर रहे हो? हाइट का। दो हाइट है, टॉल और ड्वार्फ। डोमिनेंट कौन सी है? टॉल हाइट। और फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? टी। तो जब भी आप कैपिटल T कैपिटल देखोगे तो आपको इजीली ये कोरिलेट कर सकते हो कि डोमिनेंट हाइट क्या है? टॉल। और रिसेसिव हाइट क्या है? स्मॉल टी। अगर दूसरा अल्फाबेट चूज करोगे तो इट विल मेक द थिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल गेट कंफ्यूज। Just because of this reason, I have chosen alphabet T. Otherwise, there is no particular rule to write genotypic expression. आप जीनोटाइप एक्सप्रेशन के लिए कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट डोमिनेंट के लिए हमेशा कैपिटल्स लिखेंगे और रिसेसिव के लिए हमेशा स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है? Now let us see the genotypic expression of parent pea plant. Tall trait of one pea plant is written as capital T, whereas genotype expression of dwarf plant is written as small t. After cross-pollination, the progenies produced by them in F1 generation were same. That means all were having tall height, and the genotypic expression of F1 progeny having tall height is written as capital T and small t. The genotypic expression of all the individual produced in F1 generation were same. Genotypic expression F1 progenies के सेम थे बेटा और सभी की हाइट सेम थी, टॉल हाइट थी। तो टॉल हाइट के लिए जो F1 प्रोजेनीज की है उसे हम कैसे लिखेंगे जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन में? कैपिटल T एंड स्मॉल t. Why? ऐसा क्यों लिखा जाता है? Let me explain you. Just now I have taught you that offspring carries half of its genes from its mother and half of its genes from its father. तो यहाँ पे जो F1 प्रोजेनीज है उनमें भी हाफ जीन्स टॉल पेरेंट से आई होगी और हाफ जीन्स ड्रॉप पेरेंट से आई होगी, है ना बेटा? क्योंकि अभी हमने ये स्टडी किया था कि ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स की जीन्स जाती है एंड वी ऑल नो दैट जीन्स फॉर वन ट्रेट इज प्रेजेंट इन अ पेयर। ये भी मैंने अभी पढ़ाया आपको कि हर एक ट्रेट के लिए एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है और जीन्स हमेशा पेयर में रहता है क्योंकि दो पेरेंट्स की जीन्स ऑफस्प्रिंग में जाती है, तो इसीलिए जीन्स हमेशा पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपिटल टी वाला जो जीन्स है वो टॉल पेरेंट से आया और स्मॉल टी वाला जो जीन्स है वो ड्रॉप पेरेंट से आया। ठीक है? इसीलिए जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन F1 प्रोजेनीज का जिनकी हाइट टॉल है हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो don't forget about this thing that F1 progenies have same phenotype character as well as same genotype character. F1 progenies में हाइट भी सेम होती है और जीनोटाइप एक्सप्रेशन भी सेम होता है। सभी की हाइट टॉल रहेगी और इस हाइट के लिए जो जीनोटाइप एक्सप्रेशन होता है वो भी सेम होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
कैपिटल टी की जीन्स टॉल हाइट वाले पेरेंट से आई है और स्मॉल टी की जीन्स ड्रॉप पेरेंट से आई है. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ. वन मोर पॉइंट टू रिमेम्बर चिल्ड्रन, F1 जनरेशन में आप देखेंगे तो जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो कैसा है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का दोनों सेम नहीं है बेटा, है ना. एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है. कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट पेरेंट से आया है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव पेरेंट की जीन है. तो हम इसे लिखते कैसे हैं, हमेशा याद रखेंगे, देयर इज अ रूल, dominant trait gene is to be written first and then the recessive trait gene is written. मतलब dominant trait की जो जीन्स होती है वो पहले लिखी जाती है और recessive trait की बाद में. कैपिटल लेटर वाले जो भी जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन होंगे वो पहले लिखेंगे और रिसेसिव या स्मॉल लेटर वाले जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन को हम बाद में लिखते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है. आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, स्मॉल टी और कैपिटल टी ऐसा आप नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि रिसेसिव ट्रेट को पहले नहीं लिखा जाता है. हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को पहले लिखा जाता है फिर रिसेसिव ट्रेट को लिखा जाता है. So don't forget about this rule that while writing the genotypic expression, the dominant gene should be written at first position and in second position you can write the recessive trait genes. Now let us see what happens after self-pollination in progenies present in F1 generation. अब F1 generation की progenies में जो self pollination होता है उससे F2 generation की progenies produce होती हैं. ओके बेटा, अब genotypic expressions कैसे लिखेंगे F2 generation का? To know the genotypic expression of F2 generation progenies, we have to make a box called Punnett square box. Punnett square क्यों बोल रहे हैं? Because Punnett was the person who has discovered this. Because of this reason, the box that we make to know the genotypic expression of F2 progenies is known as Punnett square. Self-pollination हो रहा है, that means there will be fertilization. Male and female gamete will fuse. So, the male gamete over here is carrying genotypic expression of capital T and small t. Even the female gamete also carries the same genotypic expression, that is capital T and small t. What is the reason? The reason I have told you just now, we have studied that in F1 generation all the progeny produced were having same phenotype as well as same जीनोटाइप. फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम रहता है F1 प्रोजेनीज के. इसलिए यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसका भी जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है हाइट के लिए और फीमेल गैमेट का भी कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है हाइट के लिए. तो ये कंफ्यूजन आप लोग नहीं रखेंगे माइंड में. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट जीनोटाइप ऑफ F2 generation progenies. यहां आपने मेल गैमेट के जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन लिखा और साइड में फीमेल गैमेट का जीनोटाइपिक एक्सप्रेशंस लिखा. अब क्या करना है बेटा? सिंपल, जस्ट सी कैपिटल T. These two genes will combine and produce a genotypic expression capital T. Capital T now will combine with small t and will produce a genotype expression capital T small t. Now the small t gene of female gamete fuses with the small t of male gamete. And combination of these two genes produces a genotypic expression of small t and small t, which represents the dwarf height. Now what is the reason why 3 plants were having tall height and 1 plant was having a dwarf height? It is the presence of dominant genes. These 3 plants which were having tall height, in the genetic expression they were having dominant gene. Can you see capital T and capital T? So wherever there will be a dominant gene, the phenotype expression will be of dominant trait.
जब भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन में तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही प्रोड्यूस होता है ना बेटा। तो यहाँ पे जो टॉल प्लांट की जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वहां पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इसीलिए उनका फिनोटाइप ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेट है, टॉल है। अब ड्रॉप प्लांट में देखेंगे बेटा, उनमें ये डोमिनेंट जीन एब्सेंट है और जो जीन कॉम्बिनेशन है या जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो स्मॉल टी का है एंड स्मॉल टी इज अ रिसेसिव जीन्स। तो यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस होगा एंड द रिसेसिव ट्रेट इज ड्रॉप। दिस इज द रीजन व्हाई this plant which is having genotypic expression of small t will have a dwarf height. That's all for today, children. We will be covering the remaining topic in our coming video. Till then, take care. Bye-bye.